Yes, hello all the students. Welcome once again to XAT. My name is Anil Chaudhary, and today, students, as you see on the screen, we are going to discuss about verbal ability and especially for OMATs. I see that majorly based on CAT, there are so many videos, so many live streams available. But at the same time, there are thousands of students, lakhs of students, in fact, whose major focus is not CAT, but they actually want to focus on OMATs. So when I talk about OMAT, SNAP is there, and MAT is there, and XAT is there. And I believe that all the students, even if you people are taking CAT, the amount of importance which you give to CAT, the same amount of importance you should give to OMATs as well. I generally see that every year, so many students, they are so concerned about CAT, so that once the CAT is over, they believe that their journey is over now, and the kind of intensity which they should show for SNAP and MAT and XAT, they generally miss it. उन्हें लगता है CAT होने के बाद the job is done. अब CMAT और NPAT को लेकर हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बट मुझे लगता है स्टूडेंट्स यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं. और CAT होने के बाद वैसे भी SNAP और NMAT में बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है. So that is the reason I must tell all the students, if you are looking for getting into Symbiosis Pune, getting into NMIMS Mumbai, or getting into XLRI Jamshedpur, and the other top B schools of India which are based on these exams. तो जितनी इंपॉर्टेंस हम कैट को देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस और अभी से हमें स्टार्ट करना चाहिए इन सब एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी. नो डाउट आपका मेजर एम्फोसिस कैट पर रहेगा, दैट्स ओके, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू पीपल कैन डू इज at least weekly, once or twice, you people can focus on taking mocks based on these exams. And especially students, when we are going to discuss about verbal ability, there is a big difference between the kind of questions which actually come in CAT and the kind of questions which come in the various other exams. CAT के स्टूडेंट्स को हम जनरली कहते हैं कि ये ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो कैप पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओके, फॉर एग्जांपल वो कैप बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रपोजिशंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंसेस, इन सब को लेकर हम कैट के एस्पिरेंट्स को हमेशा मोटिवेट करते हैं जस्ट फोकस ऑन रीडिंग, फॉरगेट ग्रामर, फॉरगेट वोकैब. एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वोकैब आती है वो पैसेज को पढ़कर हमें समझना होता है, अदरवाइज हमें वोकैब को लेकर अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती. बट स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, SNAP and NMAT, these are the kind of exams which actually test your English. Here, students, a good understanding of grammar is needed. Here, students, directly questions will be based on vocab. Here, students, you will see questions based on fill in the blanks. You will see questions based on jumbled paragraph. You will see questions based on poems also. So it becomes important. And moreover, you will see questions based on idioms and phrases, questions based on foreign words and phrases. That is the reason it becomes important कि ओमर्स का अप्रोच हम अलग से समझें और अभी से स्टूडेंट्स हम लोग इस पर फोकस करना स्टार्ट करें. लास्ट ईयर भी हम लोगों ने स्नैप को लेकर, SNAP को लेकर पूरी सीरीज रन की थी. आई अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू पीपल आर फ्री, इंश्योर दैट कि वो लास्ट ईयर के वीडियोस भी हम जरूर देखें. एंड स्पेशली स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस वर्बल एबिलिटी को लेकर भी हैं एंड एट द सेम टाइम लॉजिकल रीजनिंग को लेकर भी. आई अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स, सभी वीडियोस को देखना. और जिन बच्चों को लगता है कि ओमेट्स को लेकर एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन हमें करनी है, द नंबर इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. यू पीपल कैन गेट इन टच विद अस, या फिर कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें बता दें. माय टीम विल गेट इन टच विद यू and we will ensure that you people join us for OMETs as well. Very soon we are going to launch a dedicated batch only for OMETs. So that is the reason, if you feel like कि नहीं OMETs के लिए मुझे अलग से focused preparation करना है, तो yes, make ACAT your partner. चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस जर्नी पर अपन स्टार्ट करते हैं. 2 पार्ट्स में हम इस पूरे सेशन को लेंगे. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेपर पैटर्न ऑफ द वेरियस एग्जाम्स. इन टुडेज सेशन I will be majorly focusing on XAT, NMAT, and SNAP. Or majorly, students, I have taken a few questions which are the actual PYQs of SNAP and XAT, so that I can make you understand what kind of questions actually come in OMETs. And once we understand the paper pattern, I believe that आने वाले सेशन में जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो you will be able to understand the relevance of those questions in a proper manner. चलिए, अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली कम्स इन XAT. So XAT, XLRI Jamshedpur, and almost
टॉप 50 बी स्कूल्स ऑफ इंडिया, IIMs के अलावा यू मान के चलो कि जितने भी कैट अलाइड कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट ऑल दीज कैट अलाइड कॉलेजेस दे ऑल्सो एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ ZAT. I urge all the students that अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और कैट के बाद जो सेकेंड नंबर पर मोस्ट रेलेवेंट कोई एग्जाम है तो दैट बिकम्स ZAT. एंड मोर स्टूडेंट, जिन बच्चों की मैथ्स थोड़ी सी वीक है, जिन बच्चों का क्वांट थोड़ा सा वीक है, लॉजिक थोड़ा सा वीक है, मुझे लगता है उन बच्चों को कैट के मुकाबले ZAT में कुछ एडवांटेज मिलता है, बिकॉज ZAT का जो पूरा पैटर्न है उसमें स्टूडेंट्स देयर इज ओनली वन सेक्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, whereas when I talk about CAT there are two sections which are based on logic and quant. One is DLR and the second is quant. So my suggestion to all the students, if your quant is not very good, you people should focus more on ZAT. And moreover students, ZAT में एक नया पैटर्न आता है जिसको अपन कहते हैं डिसीजन मेकिंग. So 21 questions of decision making will be there. These are very interesting questions. इसको लेकर लास्ट ईयर के मेरे कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं. If you want to understand कि इसमें होता क्या है तो उन वीडियोस को जरूर देखना. इन द कमिंग डेज मैं कुछ लाइव सेशंस आपके सामने लूंगा डिसीजन मेकिंग और ZAT को लेकर. तो अब स्टूडेंट्स हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं व्हाट एक्चुअली कम्स इन इंग्लिश इन ZAT. ये जो पूरा सेक्शन है स्टूडेंट, जो पीपल अंडरस्टैंड, कैट में हम इसको कहते हैं VARC, लेकिन ZAT में इस पूरे सेक्शन को स्टूडेंट्स बोला जाता है VALR. इसका मतलब है वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. So you people do understand, यहाँ पर questions based on logical reasoning will also be there. So you will have to be very much clear about the concepts like assumption, conclusion, and the various other aspects of logical reasoning. And students, that का जो पेपर होता है वो बिल्कुल easy होता है, ऐसा नहीं है. लेवल का पेपर होता है. Questions are intense, questions are good, and moreover, when we compare the reading comprehension part, कैट के जो आरसी पैसेजेस होते हैं वो जनरली ZAT के मुकाबले थोड़े से लेंदी होते हैं. कैट में ऑन एन एवरेज वी सी दैट 500 वर्ड्स के आरसी पैसेजेस दे एक्चुअली कम इन कैट. ZAT के स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो मेजरली जो पैसेजेस की लेंथ होती है वो 300 से 400 वर्ड्स की होती है. और ZAT में आप मान के चलो कम से कम 4 या 5 पैसेजेस यू विल हैव टू फेस, एंड 3 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन पर पैसेज. And sometimes only 2 questions can also be there. ZAT में स्टूडेंट्स आरसी के साथ एक या दो पोयम आने के भी पूरे चांसेस हैं. आज के इस क्लास में I will be taking one poem which actually came in ZAT 2025, so that you will come to know that poems को हैंडल करना किसी भी पैसेज के मुकाबले ज्यादा आसान होता है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले reading comprehension passages and poems, this becomes the common aspect which actually come in ZAT. So out of 26 questions, अब मान के चलो around 13-14 questions will be based on RC and poems. Second, critical reasoning, you will have such questions where a small paragraph will be given to us and possibly 2 questions will be based on that. And moreover, the questions will be based on which option strengthens the argument given in the passage, which option weakens the argument, what can be the best conclusion made on the basis of the passage or the paragraph given to us. So such questions will be there. So these are the questions of critical reasoning, and इसी को students हम लोग logical reasoning भी कह सकते हैं. Yes. The next pattern is parajumbles. Yes, ZAT के जो parajumbles होते हैं वो CAT के मुकाबले थोड़े से plus होते हैं, थोड़े से intense होते हैं. So you people can assume at least 2 questions based on parajumbles, and the number of questions can be even more. Grammar becomes very important here. You people can expect at least 3 questions based on grammar. ग्रामर के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, आई विल बी टेकिंग सम सैंपल क्वेश्चंस टुडे. ग्रामर के लॉजिक्स बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होते, बट जनरली 6 sentences are given to us and we need to find out out of those 6 sentences which are grammatically correct or sometimes which are grammatically incorrect. So the basic understanding of grammar is needed, and especially students, I keep saying all the students, in case if you have good interest in grammar, in case if you people have good understanding of grammar, try to go through all the important chapters of grammar. But in case students अगर grammar को लेकर बहुत ज़्यादा अपील नहीं है, तो at least 3 chapters of grammar you people should not avoid. So one is subject and verb agreement, second is tenses, and the third is prepositions. तो किसी भी condition में इन तीनों chapters को हमें must नहीं करना है. Majorly students ZAT, SNAP और NMAT में जो grammar के questions आते हैं वो इन 3 chapters से based होते हैं.
So my disclaimer, in case if you don't have much interest in grammar, don't miss at least these 3 chapters. But at the same time, questions based on articles, questions based on conditional sentences, questions based on question tags. So these kind of questions are commonly seen in XAT. तो इसके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे. किस तरह के आते हैं वो अभी अपन लेने वाले हैं. And then students fill in the blanks. That may generally 2-3 questions will be based on fill in the blanks, sometimes even more. And what we have seen is generally a lengthy sentence is given to us and there will be 3 blanks. Okay, और ये जो questions आते हैं fill in the blanks के ज़ात में, you people will see like these questions are based on majorly based on vocab. हालांकि जो ऑप्शंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, पर फिर भी उनमें से कुछ वर्ड्स पॉसिबली ऐसे हों जिसके मीनिंग हमको पता नहीं हो. Otherwise, majorly the questions are based on understanding the tone of the sentence and purely on the basis of that, you will have to decide, okay, which option will be relevant there. And students do understand, किसी भी pattern का question आ जाए, in case if you really want to have a very good command on that, reading is again very, very important. तो जितना इम्पोर्टेंस रीडिंग का कैच में है, मान के चलो लगभग उतना ही इम्पोर्टेंस रीडिंग का कैच में भी है. ओके, चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम एंड दैट इज स्नैप. यस, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं, लेट मी टेक इट. यस, absolutely. Last year's NAT, there was one question which was based on some cartoon, okay, which was based on a picture. But anyway, even that question was actually based on a logical reasoning only. So you were supposed to see that and deduce the correct answer. So ऐसे questions भी possible हैं. तो that जो है वो CAT के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव है, और यहाँ पर जो questions की varieties हैं वो भी बहुत ज़्यादा है. CAT में तो स्टूडेंट्स आप देखोगे एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न एंड मोर ओवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज सबसे ज़्यादा है. बट दैट में यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड मोर ओवर द स्टूडेंट्स आर नॉट very, very good with reading, they will have some opportunity to score well by solving the other questions. Yeah? चलिए आगे बढ़ते हैं students. Coming on SNAP now. If you ask me, sir, among all the MBA entrance exams, किसकी इंग्लिश या कौन सा पेपर सबसे इजी होता है? तो स्टूडेंट्स उस पेपर का नाम है SNAP. 15 questions of English will be there. And students, to be very honest, the length of the questions, the time which is needed to solve these 15 questions, okay, within 7-8 minutes, you people can manage to solve all 15 questions. Majorly, the questions will be small in length, and moreover, you will see that direct questions based on vocab, direct questions based on idioms and phrases, direct questions based on confusing pairs of words. So these are commonly seen in commonly seen in SNAP. SNAP पे स्टूडेंट्स आप मान के चलना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या तो बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर आएगा तो एक छोटा सा पैराग्राफ, एंड पॉसिबली 1 or 2 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दैट. तो स्नैप में रीडिंग का पार्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बट स्नैप में ग्रामर बिकम्स इंपॉर्टेंट, idioms and phrases become important, and sometimes the questions are based on foreign phrases. स्नैप 2024 को लेकर एक मेरी सीरीज है जो काफ़ी हिट हुई थी, एंड मैं चाहूँगा कि उन सारे वीडियोस को आप लोग देखो. एंड जब भी स्टूडेंट्स आप कोई वीडियो देखो तो प्लीज़ इंश्योर करो, अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करें. मैं स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ, कीप शेयरिंग योर सजेशंस, एंड स्टूडेंट्स भी पीपल आर कमिटेड, द होल टीम ऑफ ACAT इज कमिटेड टू डिलीवर द बेस्ट. And the content which is coming on this particular YouTube channel and the content which we are delivering to our students in our paid courses, believe me students, nationally one of the best. The kind of comments which you people keep sharing with us, that becomes a morale boosting for us, and we will ensure that we will maintain a very good height as far as the quality content is concerned. So reading comprehension is not very important in SNAP, but questions based on vocab, questions based on grammar, again, questions based on usage. So these are the most common types of questions. So questions बिल्कुल भी time consuming नहीं होंगे. आप 7-8 या maximum students आप 10 minutes में सारे questions को handle कर पाओगे SNAP में. And SNAP में students होना भी यही चाहिए. 10 minutes से ज़्यादा हमें इंग्लिश में spend करने की ज़रूरत ही नहीं है. And बचे हुए 50 minutes आप पूरी तरह से spend करो in solving the 45 questions of reasoning and quant.
तो स्नैप एक बिल्कुल अलग तरह का पैटर्न है, अलग तरह का पेपर है और सिर्फ and you will have only 60 minutes of time to solve it. So my suggestion to all the students, 1 घंटे का छोटा सा टेस्ट है and that is the reason every Sunday make it a habit of taking one mock snap. So students केवल कैट के बेसिस पर स्नैप को मत करना, इसका पैटर्न अलग है, तो इसके मॉक्स कम से कम 10 मॉक्स जरूर देना. Coming on students NMAT by GMAT, okay, and this becomes the same agency जो GMAT भी conduct करती है. So you people will see that NMAT actually becomes a computer adaptive test. Students, you people would be knowing the difference between these two. जो CAT होता है ये computer based test होता है. CAT में students, even if you get the correct answer to a question or not, the next question will remain the same. But in case of NMAT, if you people give the correct answer to a question, the next question will be on a tougher scale. And students, जितने correct answers आप देते जाओगे, पेपर का toughness level बढ़ता जाएगा. And that becomes a guarantee that you people are actually scoring high in NMAT. अगर आपको लगता है कि सर NMAT बहुत easy पेपर था, इसका मतलब है आपका स्कोर कहीं ना कहीं 200 के नीचे जाएगा. और अगर आपको लगता है सर NMAT का पेपर मुझे तो टफ लगा, इसका मतलब है you are able to get the correct answers, and that is the reason the perpetual questions they kept becoming tougher. So students do understand NMAT एक बिल्कुल अलग टाइप का पेपर है and you will have only 28 minutes of time in which 36 questions of English you will have to solve. And what will come in this? Reading comprehension will be there. Okay, short and medium passages बहुत ज़्यादा टफ नहीं. जिन बच्चों ने कैट लेवल की आरसी कर ली उन सब के लिए ओमेट्स विल बिकम इजी. ज़ैट थोड़ा सा कैट लेवल है और ज़ैट को लेकर भी अलग से हमको फोकस करना चाहिए. Then you will definitely have questions based on vocab, synonyms, antonyms, and analogies, grammar based, close test. इसका मतलब होता है a paragraph will be given to us and possibly 5 blanks can be there. Okay, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन सेट आ सकता है. पैराजंबल्स बहुत ही कॉमन सा पैटर्न है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट. So NMAT stresses vocabulary plus grammar more than catch type logic. चलिए, after discussing this, now students, I'll be taking around 6 questions today. To start with, I will be taking some actual questions of grammar which were there in that, and after that, I'll take some memory-based questions based on SNAP. SNAP के और NMAT के पेपर्स कभी भी बाहर नहीं आते हैं, जबकि ZAT का जो पूरा पेपर है वो आज तक बाहर आ जाता है. इसलिए ZAT 2025 के actual questions you people can see on the various websites, but whereas the SNAP and NMAT is concerned, केवल memory based questions हैं. I cannot guarantee whether the same questions were there or not, but I can guarantee the same level of questions you will get in SNAP and NMAT. So चलिए students, I will be taking the very first question. Before that students, CAT 2026, अगर आपका कोई भी जूनियर 26 को लेकर तैयारी करना चाहता है बिल्कुल बेसिक्स के साथ, स्टूडेंट्स बिलीव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई एम सेइंग, जितनी मेहनत एस कैट की टीम कर रही है बच्चों के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक, इट्स अमेजिंग. तो कैट 2026 आई मस्ट से अगर जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो और जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो एस कैट के साथ जरूर जुड़ो, मजा आएगा. और इस पूरी जर्नी में जब तक हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा देंगे तब तक वी विल कीप गिविंग आवर सर्विसेज टू यू. इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग. बेसिक्स एडवांस तो है ही, प्रिपरेशन फॉर ओमेट्स भी है, एट द सेम टाइम द प्रिपरेशन फॉर ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉलेजेस काउंसलिंग, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. एंड जो बच्चे इस बार कैट देने वाले हैं बिकम द पार्ट ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज ऑफ एमैट, एस कैट. एंड इसमें 3 वेरिएंट्स हैं, 499 से लेकर 1499, तो कोई भी वेरिएंट आप लोग ले सकते हैं. चलिए, दिस बिकम्स क्वेश्चन नंबर 1. आई वांट एवरीवन जो भी लाइव हैं प्लीज गिव द आंसर्स, एंड जो बच्चे लाइव नहीं हैं बाद में इसको वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे, प्लीज इंश्योर दैट आप सबसे पहले पॉज करके अपने लेवल पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन. यस, तो 6 sentences are given to us and we need to find out grammatically correct sentences. कभी कभी इसमें इनकरेक्ट भी आता है, तो दैट इज द रीजन वी विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. हियर वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस. यस, can anyone give the answer? This actually becomes an actual question of ZAT 2025. I have taken some actual questions because
I wanted to show genuinely what kind of questions come. In the coming live sessions हम लोग बहुत सारे practice questions भी लेते चलेंगे और कल students 11:30 पर हम लोग मिलेंगे for a live on CAT 2026. चलो, what is the correct answer? Can I discuss? Yeah. Now see students coming on the very first sentence. अच्छा ज़ाट की एक बहुत अच्छी बात है, sentences बड़े crisp और छोटे होते हैं. क्योंकि कुछ एग्जाम्स में तो sentences इतने लेंथी होते हैं कि कोई भी बच्चा उसमें समझ ही नहीं पाता कि एरर क्या है. Now see students, ये छोटे sentences directly, if you really understand the common errors in grammar, I think identifying them will not be so tough. So there are less cars on the road today. Students, the first sentence is not correct. And why the first sentence is not correct? Because जो cars है ना, ये countable होता है. और जब भी स्टूडेंट्स कोई चीज़ काउंटेबल होती है उसके साथ हम लोग लेस यूज़ नहीं करते, उसके साथ हमको यूज़ करना चाहिए फ्यूअर. So there are fewer cars on the road today. Possibly, what is the reason for this? तो इतना सा समझते हैं. Students see, there are two different words. One is little and one is few. Okay? ये दोनों adjectives हैं. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जब भी कोई शब्द आपके सामने आ जाए, you should be able to understand that particular word belongs to which part of speech. Students, अगर अपन part of speech को identify कर पाए, तो definitely you will see that आपका ग्रामर का नॉलेज बहुत अच्छा होगा. तो कभी भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करो उसके पहले your focus has to be on understanding the part of speech. अब जैसे ये दोनों वर्ड्स हैं, ये बेसिकली हैं क्या? ये दोनों ही adjectives हैं. And students, when I talk about adjectives, you people might be knowing that there are 3 different degrees of an adjective. So the nominative degree, the comparative degree, and the superlative degree. जैसे for example, good, better, best. So good becomes a nominative case. Nominative degree का मतलब होता है जो हम यूज करते हैं किसी particular person या किसी particular thing के बारे में. So when you talk about one person or one thing, so we are supposed to use the nominative case. So I can say that I am good because I am talking about only myself. But जब भी स्टूडेंट्स हम दो पर्सन्स को कंपेयर करते हैं तो वहां पर हमें यूज करना होता है कंपैरेटिव डिग्री. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई मेक अ सेंटेंस लाइक he is better than you, so when I say he is better than you, so yes, this becomes the comparative degree. And superlative degree अपन यूज करते हैं when there are more than 2 persons. So if I say he is the best in the class, he is the best in the class, so that becomes the superlative degree. So good, better, best. Never rest until good becomes better and better becomes best. So thrive for excellence. That is the key to success. So in the same manner, little and few, ये दोनों भी adjectives हैं. और ये है इनका nominative case. अब इसका comparative degree होता है students less, इसका comparative degree होता है fewer, और इसका superlative degree is least, and here it becomes fewest. So now you people understand. Little हम लोग यूज करते हैं in case of quantity. Okay? Few अपन यूज करते हैं in case of numbers. So if anything is countable, we are supposed to use few. And if anything is uncountable, we are supposed to use little. अब स्टूडेंट्स आप देखो काश क्या है countable. अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या यूज किया? less, which becomes the comparative form of little, which is not acceptable here. तो यहाँ पर मुझे क्या लेना चाहिए? few का comparative form. So therefore students, the correct answer is there are fewer cars on the road today. अब देखो कितना elementary error है, but फिर भी मैं students को देखता हूँ, they often commit a mistake in this. Okay? चलिए, coming on the second one, she is nicer than her sister. This sentence seems to be absolutely okay. I have been here from Monday. I think students, C is not correct. So what is the mistake here? Instead of from, I should say since Monday. Okay, I have been here since Monday. So since becomes a better choice here. I know how to swim. This sentence is absolutely correct. But इसमें कॉमन गलती क्या आती है स्टूडेंट्स? कई बार अगर यहाँ पर लिखा होता I know to swim, तो ये गलत होता. इसलिए यहाँ पर how लेना absolutely correct है. No के बाद स्टूडेंट्स हमेशा how आएगा. So I know how to swim. Coming on the fifth one,
She is the girl that won the case competition. Students, ये जो that है ना, this actually becomes a relative pronoun here. But यहाँ पर मुझे refer किसको करना है? Girl को. So as I'm going to refer to a person here, so it is better that instead of that, we should use who. Okay. So she is the girl who won the quiz competition. So even this sentence is not correct. And the media are divided on this issue. यहाँ पर students are लेना बिल्कुल सही है because division is there. So even if the subject is media, it should not be taken as a collective noun. Reason being, there is division. अगर मीडिया यूनाइटेड होता तो मैं कहता द मीडिया इज यूनाइटेड ऑन द इश्यू. तो कभी कभी स्टूडेंट्स आप देखोगे जो कलेक्टिव नाउन है, sometimes it is taken as singular and sometimes it is taken as plural. That purely depends on the context of the sentence. So if there is differences in opinion, तो वहां पर अपन सब्जेक्ट को हमेशा प्लूरल लेकर चलेंगे. So students here, this is also correct. So B, D, F, the fifth option becomes the correct answer. समझ में आया सबको? Is it done? Fantastic. चलिए, coming on students, question number 2 now. The fifth becomes the correct answer. One more actual question of XAT 2025. Again, this question is based on grammar. We need to find out the 3 correct sentences. Come on. चलो, जितने भी students live हैं, please try to give the answer. Yes, everyone. Okay, so enjoy. कमला, देखो आपका जो क्वेश्चन है, इस XAT एग्जाम कैट से टफ होता है क्या? ओके, अगर मैं कहूँ XAT को स्टैंडअलोन अगर मैं एक एग्जाम की तरह देखूं तो यस इट इज टफ. कैट से टफ है क्या? नो, नॉट एट ऑल. ओके, हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस थोड़ी से टफर साइड हो, बट दैट डज नॉट मैटर. Second point which you people have to understand is all these are competitive exams. So even if the paper is tough, at a very low score, you people can still clear the cutoff. इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर इजी है कि टफ है. अगर पेपर इजी है जैसे स्नैप, आप देखोगे स्टूडेंट्स वहाँ पर जो कट ऑफ है ओके वो हाई जाता है. और अगर पेपर टफ है जैसे XAT एंड कैट, तो वहाँ पर कट ऑफ लो जाता है. हार्डली मैटर्स, कॉलेजेस को अपनी सीट्स तो भरनी है, अंडरस्टैंड. इसीलिए ये सब नेगेटिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस तो पूछने ही नहीं चाहिए. सर आप तो बताओ XAT में आता क्या है और कट ऑफ क्या है, and I'll see where do I stand today and how I can improvise. Okay, Kamla, approach अपना change करता हूँ. चलिए, all the students, what is the answer to this question? Come on. Shall I give the answer now? ठीक है. चलो मैं बताता हूँ which is the correct answer. Correct sentences हमको identify करना है. The dean asked for additional funding. The dean asked for additional funding. Seems to be okay. The boss discussed about the new project with his team. Students हमेशा ध्यान में रखना, discuss के साथ हम कभी कोई preposition use नहीं करते. So I should say the boss discussed the new project. So this becomes the correct answer. Okay. So this question set is actually based on preposition. All these sentences, they carry a common kind of error. Okay, जिसमें भी गलती है. And the errors are commonly based on prepositions in this particular question. Radhika is good in data interpretation. I should actually say Radhika is good at. हमेशा ध्यान में रखना, good के साथ at आता है. Proficient अगर मैं use करता हूँ तो in आएगा. So Radhika is proficient in and good at. Okay. So B is not correct. C is not correct. Now coming on. Neil is transitioning into a new phase of life. यहाँ पर into लेना बिल्कुल ठीक है. Because whenever there is some change, तो वहाँ पर students preposition में into लेना बिल्कुल ठीक है. You people do understand what is the difference between in and into. For example, if I make a sentence like I am in the class, so when you are already in, वहाँ पर in आता है. But for example, if I say I am coming into the class, so when I say coming into the class, तो जब मैं बाहर से अंदर आता हूँ, whenever movement is there, whenever change of medium is there, तो वहाँ पर into आएगा.
So here students transitioning into, this becomes the correct answer. Please pour the milk into the bottle. Please translate this sentence into English. तो इस तरह से sentences बनते हैं. तो into यहाँ पर use करना बिल्कुल ठीक है. Fifth, students, Rajat emphasized on the need for consistency in XAT preparation. यहाँ पर भी students there is a mistake, and the mistake is emphasized, which is a verb here. इसके साथ कभी भी कोई preposition नहीं आएगा. So we should never say Rajat emphasized on. We should say Rajat emphasized the need for. But you people do understand. अगर मैं emphasis word use करता हूँ, okay, if I use the word emphasis, तो इसके साथ हमेशा on आएगा. So do you understand? Emphasis. So when I say emphasis, it becomes a noun. So emphasis on, this is correct. But when I say emphasize, emphasized as a verb, तो on will not come. ठीक है? ये छोटा सा पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना. इसीलिए students, it becomes very much important for us to understand which word belongs to which part of speech. And at the same time, we people should also understand which preposition will come with which particular word. तो preposition के errors को identify करना सबसे मुश्किल होता है, understand. Okay, ये इतने harmless looking errors होते हैं. हमें लगता है student sentence बिल्कुल सही है, but we often commit a mistake in this. Now this car is superior to. Superior के साथ हमेशा to आएगा. Therefore this sentence is absolutely correct. You people do understand, जब भी अपन comparison करते हैं, we generally use than. तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, superior than, senior than, which is not correct. So make it a point. Senior, junior, interior, exterior, superior, inferior, anterior, posterior, prior, prefer. इन सब शब्दों के साथ हमेशा to आएगा. समझ में आया? Let me repeat once again. Senior, junior, superior, inferior, interior, exterior, anterior, posterior, prior and prefer. इन सब के साथ अपन हमेशा to use करेंगे, and use नहीं करेंगे. तो यहाँ पर correct answer A, D and F. The first option becomes the right answer. Agreed? Done. Well, now students, I will be taking a small poem which was there in XAT 2025, and 2 questions are based on this poem. And after that, I'll be taking 2 questions based on vocab which were possibly there in SNAP. Come on, everyone. It's a wonderful poem. बहुत simple इसके words हैं. Okay, and see the question. Which of the following statements best conveys the theme of the poem? I must suggest all the students, XAT में poems को सबसे पहले जरूर solve करो. एक तो ये less time consuming होता है और आंसर देना भी बहुत मुश्किल नहीं होता. So look how you turned on the ceiling fan. It is too high. See how it shakes and trembles. You walk into this room with your hot ideas, and the ceiling fan has to work harder to cool down the room for us. You walk into this room with your crazy eyes, and the ceiling fan wants to fly loose. Fly loose का मतलब है एक तरह से फ्री होना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है. अंडरस्टैंड? एक्चुअली ऑथर एक बहुत अच्छी एनालॉजी यूज कर रहा है. वो किसी ह्यूमन की मेंटल स्टेट को कंपेयर कर रहा है सीलिंग फैन के साथ. Okay, so wants to fly loose. So when I'm talking about the ceiling fan here, I'm actually talking about a human mental state. So we people really want to fly loose, but at times we are not able to. It dreams of becoming a spider lily. Spider lily is a kind of flower. जो किसको symbolize करता है? It symbolizes grace and elegance. Okay, so it's a beautiful flower. The dreams of becoming a spider lily. So we humans, we really want to become a spider lily, but students ऐसा हो नहीं पाता है. अब देखो, crazy eyes, hot ideas, ठीक है? ये सब चीजें क्या दिखाती है? Understand? So if I ask a question, which of the following statements best conveys the theme of the poem? तो क्या लगता है students? What is the correct answer? Yes, come on. Which is the correct answer? The poem conveys a subtle art of argumentation and counter-argumentation. Not at all. The poem talks about inner conflict resolved by an attempt to restore balance.
ठीक है, यहां तक तो ठीक है, इट टॉक्स अबाउट इनर कॉन्फ्लिक्ट, बट ये कहना resolved by an attempt to restore balance, so nowhere that reference is also given here. The poem talks about the conflict between transformation and escapism. एक तरफ तो मैं बदलना चाहता हूँ, दूसरी तरफ मैं बचना चाहता हूँ, तो उसके बीच की कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है. थर्ड ऑप्शन seems to be okay, but transformation and escapism, okay. So the poem talks about the conflict between these two words. Okay, seems okay, but transformation, escapism तो फिर भी समझ में आता है. ट्रांसफॉर्मेशन, a person wants to transform, ऐसा यहाँ पर कहीं पर भी रेफरेंस नहीं दिखता. So I slightly disagree with this particular word here. The poem conveys fear and anxiety due to the loss of stability. Fear and anxiety. I think students, when I talk about hot ideas, when I talk about crazy eyes, when I talk about it shakes and trembles, okay, I think students loss of stability भी यहाँ पर signify होता है and fear and anxiety भी यहाँ पर signify होता है. तो इसीलिए if I compare all the options, both options seems to be the best suitable answer here. The poem conveys quest for self during emotional turmoil. Quest for self, okay, during emotional turmoil. फिफ्थ ऑप्शन भी स्टूडेंट्स काफी हद तक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है फियर एंड एंजाइटी एंड लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, इसे हमें प्रेफर करना चाहिए. वैसे इमोशनल टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब भी टर्बुलेंस होता है. ओके, टर्मोइल का मतलब भी होता है कैओस, अप्स एंड डाउन्स, तो एक तरह से इमोशनल अनस्टेबिलिटी. तो द पोएम कन्वेज क्वेस्ट फॉर सेल्फ, क्वेस्ट फॉर सेल्फ, ओके, अपने आप को डिस्कवर करना. तो कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पोएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है that is to talk about fear and anxiety. So fourth and fifth seems to be a closer choice, but students, I'll go with fourth. Okay, I want your opinion on this. The fourth is a suitable choice here. Coming on students, the fifth one. Yes, the next question. Again, this question is based on the same poem. So what does the author best mean when she says, you walk into this room with your hot ideas and the ceiling fan has to work harder to cool down the room for us? Yes, what is the meaning of this line? That the person brings with him passionate, intellectual and emotional energy? Not at all. अगर वो पर्सन पैशनेट होता, इमोशनल एनर्जी लेकर आता, तो फिर स्टूडेंट्स किसी फैन को आपके लिए रूम ठंडा करने की जरूरत नहीं होती. ओके, यू आर कमिंग विद हॉट आइडियाज. तो व्हेन आई से हॉट आइडियाज, यहाँ पर वो हॉट आइडियाज पॉजिटिव सेंस में नहीं है. अंडरस्टैंड, इट टॉक्स अबाउट द फियर एंड एंजाइटी, इट टॉक्स अबाउट द मेंटल instability which is there. Second, that the person's presence creates palpable tension in the room. Palpable, what is the meaning of palpable? Palpable means something which is आंसर आ चुका है. Palpable का मतलब होता है something which is tangible, something which is tangible, which can be seen, which can be felt. So that is the meaning of palpable. So that the person's presence creates palpable tension in the room. Absolutely. तभी तो students, we are talking about the fan. That fan has to work harder to cool down the room for us. Yes, that person is coming with some tangible tension. Third, that the person's hostile presence. I think students, यहाँ पर hostile word is not suitable. That the person present develops self-doubt in others. In others, not at all. That the person's presence makes the ceiling fan lose its ability to handle intense energy. ये तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही नहीं हो सकता, बिकॉज किसी भी पोयम का एक इडियोमैटिक सेंस होता है. ठीक है, यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ दैट. इफ यू पीपल आर डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द पोयम, द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, हियर इज वेयर वी ऑफन कमिट द मिस्टेक. पोएम्स में स्टूडेंट्स आप हमेशा देखोगे बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, जिन्हें कॉमनली हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं. इसी यूट्यूब चैनल पर अगर सर्च करोगे, so you will come across one session of mine which is based on figures of speech. So if you really want to develop a very good understanding on poetic devices, I urge all the students to watch that session as well. चलो एक और important question मैं आपसे पूछता हूँ. जैसे एक word दे रखा है students, lose. Can you people tell me lose and lose, इन दोनों में क्या difference होता है? And there is a slight difference in the pronunciation also. So one is loose and one is loose.
But what is the difference between these two? Now, mind it, these are the common pairs of confusing words on the basis of which possibly questions are based on NMAT and SNAP also. अब अगर किसी बच्चे को लगता है ये दोनों वर्ड्स वन एंड द सेम है, देखिए रॉन्ग, इन दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है जो पीपल विल हैव टू फाइंड आउट. Last slide, 2 more questions, and these 2 questions are based on vocab. So find the odd one out. These kind of questions you people can expect in SNAP. Epicurean, gourmet, gastronomist, and hiders. Yes, can anyone give the answer? Can anyone give the answer to this question? One student has given the answer. Lose means हार जाना, and ठीक है, absolutely, to enjoy, very nice. Hello, बाकी सब students, come on, give the answer to question number 5 now. Epicurean, gourmet, gastronomist. And mind the pronunciation of this word. It should not be spoken as gourmet. It is gourmet, gourmet, understand. Actually, ये तीनों words one and the same है, almost. Because ये तीनों words का मतलब होता है connoisseur of food. So when I say connoisseur of food, so these are the people who love eating good food. Good food. These are the people जिन्हें बहुत अच्छा खाना बहुत पसंद है. और ऐसा ही नहीं कि बहुत अच्छा खाना पसंद है, but at the same time, these people have got very good knowledge about food. इन्हें स्टूडेंट्स आप देखोगे, जैसे गॉमी हो गया, जैसे एपिक्योरियन हो गया, या फिर गैस्ट्रोनॉमिस्ट, ये लोग किसी भी सिटी में बेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट में जाएंगे, बेस्ट ऑफ द डिश को ऑर्डर करेंगे. ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर भी कुछ भी खा लेंगे. एंड सेकेंड, आप इनसे पूछोगे ना किस रेस्टोरेंट में कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट मिलती है, इनका नॉलेज इतना अच्छा होता है कि वहाँ का ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, वहाँ की ये गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी है. तो दीज पीपल आर एक्चुअली फूडी एंड मोर ओवर दे हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट फूड. तो जो पीपल डू अंडरस्टैंड, ये तीनों ऑलमोस्ट वन एंड द सेम है. हालांकि स्लाइट वेरिएशन इनमें भी हो सकता है, but we are supposed to find out the odd one out, and here students the best answer is fourth option. What is the meaning of hiders? Someone who is not beautiful, ugly, dull, so that is the meaning of hiders. चलो एक और pair of confusing words मैं बताता हूँ. One is gourmet and second is students gourmand. Now what is the difference between gourmet and gourmand? तो स्टूडेंट्स ये आपको पता करना है दोनों में डिफरेंस क्या होता है. gourmet and gourmand, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट. ये दोनों बहुत रिलेटेड वर्ड्स हैं, बट फिर भी देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, एंड पॉसिबली वी कैन कमिट अ मिस्टेक इन केस इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस डिफरेंस. चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6. एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनी आंसर? The manager's decision to fire the employee was seen as a dash, act of revenge, rather than a professional choice. Yes, which is the correct answer? Callous, what is the meaning of callous? The meaning of callous is to remain indifferent. Indifferent. I don't care. सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे. So if you people have this kind of insensitivity, so if you people have this kind of emotionlessness, this is being called callous. If a person is callous, he is indifferent. He does not care for the emotions of others. Anyway, callous is not the correct answer. Spirited, this becomes a positive word. But here, students, the kind of sentence which is given to us, I need to have a negative word here. Then coming on vindicated and malicious. Vindicated. Students, अगर यहाँ पर vindicated की जगह vindictive होता तो बिल्कुल सही होता. Vindictive का मतलब होता है hurting others without any good reason. Okay, punishing others, hurting others without any good reason. So that is the meaning of vindictive. But here, students, the word is vindicated. Vindicated means something which is authentic, something which is genuine. Authentic, genuine. So that is the meaning of vindicated. Coming on, students, malicious. I think you people understand what is the meaning of malice. ऐसे भी ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, किसी भी वर्ड के साथ इन केस ऑफ mal comes, okay, in the beginning,
तो मान के चलना this word is negative. Because when I talk about mal, okay, it is negative. It is related to something like evil, something which is bad, not good. और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पर अपन माल यूज करते हैं एज अ प्रोफिक्स. जैसे फॉर एग्जांपल माल प्रैक्टिसेस, ओके, माल न्यूट्रिशन, मालवेयर कंप्यूटर्स में. इसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं. ओके, मालवोलेंस, माल एडिक्शन, माल फैक्टर, ये सब के सब नेगेटिव होते हैं. तो मालस itself means something bad fate. ओके, मन में जब कुछ दुर्भावना होती है, okay, when you have some ill will, so that is known as malice. The students, malice becomes a noun, malicious becomes an adjective. And anyway, I need to have an adjective here. So malicious act of revenge. इसका मतलब है students with some bad intent. Okay, with some evil intent. Okay, so that is the reason second option becomes the correct answer. Okay, चलिए, so all the students, this was the discussion about OMATs, and I think ये हमारा जो first live था 2025 OMATs के लिए बहुत मजा आया होगा. मुझे तो स्टूडेंट्स पढ़ाते हुए बहुत मजा आया. आपको कितना मजा आया? if it is possible, सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करो, शेयर करो अपने जितने दोस्त हैं. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप लोग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हो, यूट्यूब चैनल पर ACE-CAT जो भी देता है वो तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, यस, आई डू एक्सेप्ट दैट. इन सब सेशंस के पीछे हमारा कॉमर्शियल इंटेंट जरूर है. अंडरस्टैंड, हम चाहते हैं कि हम दिखाएं वेयर डू वी स्टैंड. ओके, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूं कि पूरी तरह से चैरिटी है. नो, देयर इज अ कॉमर्शियल इंटेंट, बट एट द सेम टाइम ओके, आप तो स्टूडेंट्स कम से कम इस यूट्यूब चैनल के कंटेंट को फ्री में तो यूज कर ही सकते हो. एंड इन केस इफ यू पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद whatever you people have studied so far, and if you people don't want to take a chance, my suggestion to everyone, become the part of the paid courses of ACE-CAT. So once you take enrollment with us, it becomes your moral duty, it becomes a professional duty also to give you the best possible assistance. So anyway, thank you so much. See you soon tomorrow for the next live. Thank you everyone.